hope that after the speech of Shri Arif Mohammad Khan, our student will feel a motivation, a significant change in their thought process. Thank you very much. Thank you, sir. Times change, and so must our approach towards certain social issues. We made laws for our own sanctity and security, but when people begin getting victimized by the system, then it becomes very important for a change to occur. And to stand aside from the system and look at things from a different perspective is a big challenge. We would like to request Professor V.K. Sharma sir, Executive Director, Hindustan College of Science and Technology, to put some light into this matter and educate us all in this regard. The Honorable Mr. Arif Mohammad Khan, Chief Speaker and Chief Guest of today's gathering, all the dignitaries on the dais and dear students. Truly we are blessed that a person of the stature of Mr. Khan is here in this college. He is known by two very important incidences in the recent history of this nation, for defending the right of women, for defending the dignity of the humankind, for being equitable, fair and justified, for justice for all the human beings based on the constitutional values and human values. The most recent case of triple talaq, he had stopped using his black coat as a Supreme Court lawyer for more than 2 decades. And when the women who were unjustly given triple talaq were fighting for their rights in the Supreme Court, a Supreme Court lawyer charges a huge fees. Those women could not have paid. They were facing discrimination in their houses and their societies. Yet they were fighting. They did not have money even to travel to Delhi. Here is the man who stood for them, fought the case, and got justice delivered to them without charging a single penny. We all teach about human values, जीवन के आदर्श क्या होने चाहिए, मूल क्या होने चाहिए, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस में उतारने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे हितों से और हमारे आदर्शों से हमेशा टकराव होता है। वो सैक्रिफाइस करने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। शाहबानो केस में in the late 80s, Supreme Court delivered a judgment giving maintenance allowance to a Muslim lady, Shahbano, who was victimized by the husband, and there was a huge uproar across the entire country. On one side was the entire Muslim population and their vote bank. On the other side was human dignity and justice. Mr. Khan stood with human dignity and justice. Rajiv Gandhi preferred to go with the vote bank for political reasons. He resigned and walked out of the cabinet. How many such examples do you get in this country? I have two role models in life whom I have seen and followed. One is Dr. APJ Abdul Kalam, and second is the person who is sitting before you, Arif Mohammad Khan. I am very sure what he speaks, he'll speak from his experience, from his heart, and I'll request all of you to deeply imbibe what he says on Indian civilization values. It will be a huge transforming experience for all of you. Thank you. Thank you, sir. Motivation is another necessary ingredient for change. It requires a lot of strength to fight off all the resistances and put forth your voice before the masses. And that strength comes from motivation itself. Every warrior needs a guiding light, a baton to hold into in difficult times. We'd like to request Shri Pradeep Mehta sir, Executive Vice President, Sharda Group of Institutions, to guide us about the guest talk.
माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रोफेसर वीके शर्मा, डॉक्टर चौधरी, Jitin Mudaliarji, who's sitting here on the dais, members of the media, and students. I would not like to be standing between you and what you're about to hear from a person of eminence, of such eminence as Shri Arif Mohammad Khan. As a young man, I think I may be just a couple of years older than him. As a young man, I've heard exactly those things which Sharma ji spoke about. He's a very upright individual, stood for his personal values and integrity, and made those sacrifices at an age where most people would have preferred to remain in politics or would have preferred to remain in the government and enjoyed the so-called fruits which follow. For me, the Indian values are rooted in the family tradition, respect for elders and parents, respect for guru, जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, आपके जो शिक्षक हैं, the values which we have been taught right from the ages of ahimsa, Buddhism, Jainism, Mahatma Gandhi, the values of a just polity, a just society, the values of dignity of labor, the values of Vasudhaiva Kutumbakam. You would have heard our Prime Minister say that a number of times, Atithi Devo Bhava. These are basically values which are part of the Indian tradition. But one of the most significant values which Indians have is the faith in the institution of marriage. This institution of marriage, the faith or the trust in it, is perhaps only there in the Indian society. If you go abroad, you get married today, you get divorced 10, 15 days later, a year later. In the Western countries, they have a prenuptial agreement. शादी के पहले ही शादी करने वाले लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाती है कि अगर डाइवोर्स होगा तो मुझे आप ये देंगे, मुझे आप ये देंगे और मुझे आप वो देंगे. That's the kind of materialistic society which obtains in the Western world. हमारी society ऐसी नहीं है. और मैं ये मानता हूँ कि this institution of marriage, the faith in the institution of marriage, is precisely because of the family values जो हम बचपन से अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनसे सीखते हैं. I think Arif Mohammad Khan ji embodies all of that in ample measure. I would request you to listen to him, because he's a person of tremendous eminence, a lot of learning. Please listen to him. Thank you very much. Thank you, sir. And now, the moment arrives when our special guest will be addressing us and sharing his experience and vision while educating us about how to make change happen. We request Shri Arif Mohammad Khan, sir, to please come to the podium for his address. Let me first express my gratitude to Dr. Rajiv Upadhyay, Professor V.K. Sharma, Shri Pradeep Mehta, and Professor Jitendra Modelia, who had spoken to me and had extended the invitation, members of the faculty and fellow students. Honestly, I'm thrilled
to be here with you because uh, meeting youngsters in an educational institution, interacting with them is a very refreshing experience. And I'm very fortunate, very lucky that uh, I have almost regularly I enjoy these interactions. I'm sure that you must be conscious, aware of the importance of the education and the privilege that you have that you are being trained in an institution like this Hindustan College of Engineering and Technology. Not everybody, although it is right of everybody, but not everybody has this chance. Einstein has said that your education really starts after you have forgotten everything that you had learned in the school, college, or university. These institutions they provide you with the skill of learning. Being a institution, being a student in an institution like this is not just that you collect all the information and knowledge, but to develop the capability to learn. We have a sentence of just two words, three words, which is attributed to Bhagwan Bodh, but it finds mention in some Ved also. Apo Deepo Bhava. Be your own light. You are not supposed to remain confined to the study of your textbooks alone. Developing the capability to learn. You can learn, you learn from teachers, you learn in the institution, but there are so many other sources. Once you develop that capability, that capacity, then, and you are engineering student, most of the students here, they are doing engineering. Most of them are doing engineering. So engineers are very branch of science. Whatever new researches are made, the scientist only discovers the physical principle. Keen curiosity to know. And deep passion to understand things. The scientist, they discover a principle, they do not create something new. The natural, it is through science that you have gained control over so many natural forces which have helped making the lives better in every field. It is the engineers who put those discoveries, who put those ideas into practice. It is they who have to
construct and build on these new researches. I was on the lighter side. Somebody had sent me, possibly, or I had read it somewhere, that a man was passing by the poolside, and there was no one else, and he hears a frog speaking in human language, saying that if you kiss me, then I will turn into a princess. This man picks up that frog and keeps it in pocket. The frog again says that I have requested you to kiss me so that I can turn into a princess. He again took it out, looked at him, smiled, and again put the frog into his pocket. Third time the frog said that I am making this request, please kiss me. I will turn into a princess. I will be with you for a week and I'll do anything which you ask me to. He again looked at the frog. He smiled at him, at that frog, and did nothing. Said, I will. Fourth time the frog said that, please do this. I will turn into a princess. I will be with you and will do anything which you would want me to do. Then this man said that, look, I'm a software engineer. I'm not interested in a princess. I have no time. I have no time for the princess. But having a frog who can speak human language is very cool. Therefore, I'm carrying you with me. So I can understand how busy all the time you are. And you have chosen a career, a profession, which will keep you busy as long as, may you live very long lives, but as long as you live. My best wishes are with you. Science, engineering, all branches of science, they have wasted immense powers in the hand of man. We go into any field, but as it happens with almost with any new, why don't you come here? The seats are empty. Come here. With, the laws of nature are such that everything has two sides to it. And so is the case with science. So is the case with all advanced studies. There are highly beneficial aspects and there are painful aspects too. उसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन उसमें इंसान का दिमाग, the human mind is such that along with beneficial aspects, the painful aspects are also found therein.
उसी साइंस के नतीजे में जिसने हमारी जिंदगी में इतनी आसानियां पैदा करी हैं, लोगों का सोचने का अंदाज बदल गया है, उसी ने ऐसे खतरनाक हथियार भी पैदा किए हैं। उसमें भी हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने पैदा किए हैं वो, कि जो आज की तारीख में शायद टुडे if you look at the nuclear arsenal, then possibly the number of nuclear bombs which one country has are enough to destroy the mankind, are enough to destroy the human civilization. So this is the basic. Then there is another factor. Because of these advances in technology, science and technology, engineering, all these branches, they have also resulted in disturbing the comparatively static and calm social orders. जमाने से खास अंदाज से लोग रहते चले आ रहे थे। इस टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने, it has given fillip to the process of social mobility. खुद अपने, you look at, if you look at our own country, for a long period of time, all the professions were hereditary. That is not the case today. And in fact, in West, the democracy, and with democracy, the pluralistic societies, the democracy particularly came as a result of the advances which they made in the field of science. Because science gave rise to the process of social mobility. And almost the whole world started moving into a different direction. Till about 300 years back, in the world, we had either empires or the tribal societies. In fact, I was reading a lecture which was delivered by Swami Ranganathananda, who was president of the Ramakrishna Mission, the mission founded by Swami Vivekananda. And Swami Ranganathananda was a very profound scholar, very erudite, and he made a very important point. He said that for very long periods of time, possibly since the inception of our civilization, we were, in India, we were Prja. Prja in English can be translated as subjects. Although in our history, in some areas, some of you might have, in fact, I was told that there are many students from Bihar in this institution. Bihar, places like Vaishali, they were, in ancient times, the king used to be elected. We had that system, although it did not last very long. But that was some areas in India and some areas in Greco-Roman civilization, where limited kind of democracy functioned. But a kind of democracy which has come into existence after this new age of advancements in science and industrial revolution, that actually gave birth to democracy. And democracy compelled these societies
for the successful functioning of the democracy, the societies needed to be pluralistic. But I want to go back what I was saying earlier, that the lifestyles have changed today. uh, in almost every field, what impresses me most is the advances which we have made in the health sector. It is the science, it is the engineering which has revolutionized the whole concept and has made things so easy. But there are baneful influences also. And it has been said in one of the UNESCO declarations that the wars, since the wars begin in the mind of man, therefore, it is in the minds of men that defenses of peace must be constructed. And these defenses of peace it has been highlighted that merely political and economic agreements cannot produce that peace. This peace must be established with the help of moral and intellectual principles. You know, one question that has been raised many times, that outside the Western world, and USA is also included in the West, outside the Western world, the only country which has experimented successfully with democracy is India. Last 70 years after independence. Why we were able to ensure its success? India was able to ensure its success. India was able to ensure success of democracy because the basic ingredients which are required to make democracy a success were already present in the Indian society before India became formally a democracy. I was referring to the lecture of Swami Ranganathanan, and I am making this reference to highlight something. He said that for millennia of years we were subjects, हम प्रजा थे. अब हमें ये, we must be aware of the fact, we should be conscious of the fact that today we are not प्रजा, we are Nagrik. We are citizens of India. When you are प्रजा, then the mindset is totally different from when you are citizens. You are Nagrik. उस जमाने में कहते थे जैसा राजा वैसी प्रजा. In democracy, it is the other way around. The sovereignty does not rely, we have a government. Government exercises sovereignty on behalf of the people of India. Government, the sovereignty does not reside in the people who are in government for a brief period of time. After every 5 years, sometimes even earlier, if there is political instability, they again come to the people, they seek their mandate, their approval. वहां पर कमजोर से कमजोर को भी ताकतवर का निशाना नहीं बनने दिया जा सकता.
सिविलाइजेशन का, संस्कृति का मतलब ही ये है that our society should not be a society of fish, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और इसीलिए इसमें खुद हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी दुनिया में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत डिटेल में वी हैव ए चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि हम कमियां नहीं हैं, बहुत कमियां। आई थिंक therefore I am, this is a line from the Upanishad। अगर अवेयरनेस नहीं है हमें और अगर हमें कॉन्शियसनेस नहीं है अपने राइट्स के बारे में, तो कोई दूसरा नहीं आपको वो दे के आके और देने वाला है। मुझे खुद उसके बारे में, विजिलेंस इज द प्राइस विच वी पे फॉर लिबर्टी। आजादी के लिए जागरूकता के बगैर आजादी नहीं रह सकती। But the point that I am making is that today there are many problems we are faced। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमारा सामना है, और ये समस्याएं इसलिए हैं, ध्यान रखिए कि पूरा सभ्यता का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन, वो इंसान की जो इंस्टिंक्ट होती हैं, जो पैशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके और जो बुद्धि है, दिस इज द स्टोरी ऑफ क्लैश, कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंस्टिंक्ट, पैशन एज अगेंस्ट रीजन एंड इंटेलिजेंस। जितने भी all sentient beings, they all act instinctually, they all have emotion। अगर आपके पैर में कांटा लगता है, तकलीफ होती है, अगर आप उसी कांटे को जानवर के जिस्म में चुभाएंगे, उसको भी तकलीफ होती है। तो सभ्यता कहां मानी जाती है? सभ्यता तब मानी जाती है जब हम अपने इंस्टिंक्ट्स और पैशंस को कंट्रोल करके अपनी अकल और समझ का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो सभ्यता का सफर होता है। दैट इज द जर्नी ऑफ द सिविलाइजेशन। और अगर हम इंस्टिंक्ट, पैशन, इमोशन, सेंटिमेंट, वो उसमें मैं जो चीज मैं कहना चाहता था वो ये थी कि उस इंस्टिंक्ट में ये बात शामिल, the human beings on this planet, they have existed since aeon of years। You know better than me because I have not been a student of science, but the history of civilization is not even, the known history of civilization is not even 10,000 years old। Now for billions of years, you have been actuated by your instincts and passions. And since last about 7,000-8,000 years, the reason and intelligence is developing, and that is guiding you. So the age of reason and intelligence is much less than the age in which human beings have been actuated and motivated by their passions and instincts। उसका नतीजा क्या होता है? अच्छा खासा रीजनेबल आदमी, लेकिन उसके ऊपर भी वो कई, जो एक लंबा समय की जो उसकी इतिहास है, वो उसके ऊपर हावी आ जाता है। और वो इतिहास काहे का है? When you allow your instincts and your sentiments to motivate you, तो उसमें एक चीज आती है जहां when I am motivated by my instincts and emotions and sentiments, then the result is that I try to dominate over others।
which is an animal instinct. And the human instinct is कि मेरे दिल में सम्मान हो दूसरे के अधिकारों का। मेरे दिल में छोटी मछली को बड़ी मछली ना खा जाए। और मैं ऐसा मानता हूं, जो मैंने पहले कहा, कि हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में ऐसी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं जो हमसे भी पुरानी हैं, लेकिन उनका बीच में क्रम टूट गया। आज वो पुरातन विभाग जो हैं उनके अध्ययन का विषय। भारत की संस्कृति, अगर हम जो सबसे कम आंकड़ा है अगर उसको भी लें तो 3,500 साल से ज्यादा पुरानी। हालांकि अब जो नए साक्ष्य आ रहे हैं वो 5,000 साल नहीं, बल्कि इंडिकेट ये कर रहे हैं कि शायद ये 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी संस्कृति। आज की तारीख में दो रायें, एक 3,500, एक 5,000। लेकिन नए साक्ष्य जो अब आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद और भी पुरानी। तो मैं बहुत दफा गौर करता हूं कि क्या चीज है जिसने इस संस्कृति की निरंतरता को बना के रखा है। What has ensured the continuity of this civilization? How this civilization has survived such a long period of time? और मैं उसको जितना देखता हूं उतना ही मैं कन्विंस होता चला जाता हूं कि इसमें कुछ, देखिए, हर चीज को बस समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको आई एम ट्राइंग टू क्रिएट रोमांस ऑफ द ओल्ड। नो, हर चीज चूंकि पुरानी है इसलिए अच्छी हो ऐसा नहीं होता है, और हर चीज नई हो तो बुरी हो ऐसा भी नहीं होता है। मेरा जो बुनियादी कहना है वो ये है कि कुछ सिद्धांत होते हैं, सर्टेन इटर्नल प्रिंसिपल्स। आप तो इंजीनियर हैं, अगर 10 मंजिल से कोई छलांग उतनी ऊंचाई से अगर 5,000 साल पहले छलांग लगाता तो भी मरता, और वहां से आज भी छलांग लगाएगा तो भी मरेगा। कुछ चीजें हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और बेसिक प्रिंसिपल इस मुल्क ने किस चीज में, जो मुझे लगता है, मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूं, जो मुझे लगता है कि जिस चीज ने इसकी निरंतरता को बना के रखा है, जिसने इस संस्कृति को जिंदा रखा है, वो इसकी है कि जो चीज मानिए यूरोप जो आज हमसे बहुत आगे, बहुत विकसित, लेकिन जो चीज उनकी समझ में आई एक लंबे संघर्ष के बाद, the clash between the church and the state, and then they realized, they accepted pluralism, and they realized that by setting fire to the house of my neighbor who has a faith which is different from me, or by subjecting him to physical persecution, I cannot improve his faith. The faith of my neighbor is none of my business. तुम क्या बिलीव करते हो वो तुम जानो, मैं क्या बिलीव करता हूं वो मैं जानता हूं। But that should have no bearing on my rights as citizen of that country. इस देश ने वो चीज, अगर 3,500 साल है तो 3,500 साल, और 5,000 साल है तो 5,000 साल पहले कही, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। The truth is one, and the sages, those who know it, they describe it variously. सच्चाई एक है। वो मौलाना रूम की मसनवी कुछ लोगों ने तो जरूर देखी होगी। तो उन्होंने कहा कि भी एक हिंदुस्तानी, एक ईरानी और एक तुर्की, टर्क, वो तीनों साथ में ट्रेवल कर रहे थे। तो आखिर में पैसे कम बचे तो वो एक कह रहा था कि मुझे इस्ताफील खाना है, एक कह रहा था मुझे अंगूर खाना है, एक कह रहा था कि मुझे अनब खाना है। वो कहता था नहीं ये आएगा, वो कहता था ये आएगा, वो कहता है ये आएगा। एक आदमी जो तीनों भाषाओं को जानता था वो बोला कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे तीनों का ला के देता हूँ। उसने अंगूर ला के उनके सामने रख दी। तुर्की में उसको इस्ताफील कहते हैं,
अरबी में उसको अनब कहते हैं, ईरान में और हिंदुस्तान में उसको अंगूर कहते हैं। तो ये बहुत दफा हमें लगता है जब हम गहराई में जाके देखेंगे तो हमें लगता है कि ये जो 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 चीजें, जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश जो पैदा होते हैं, ये दे आर मोस्टली रूटेड इन इग्नोरेंस। अज्ञानता से जो 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 पीड़ा है, अज्ञानता अपने आप ने पीड़ा है। अन्नासो आदाओ मा जहिल, ये अरबी की में मौला अली का कौल है, जिसमें कहा है कि लोग उस चीज के दुश्मन बन जाते हैं जिस चीज के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता, उस चीज के लोग दुश्मन बन जाते हैं। हमारे यहाँ में मुझे दो बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, जरा गौर कीजिए कितनी पुरानी बात है, और ये गौर कीजिए कि क्या इसमें हमारे लिए कोई पाठ है। इज देयर एनी लेसन फॉर अस इन दिस एनेक्डोट? गौर कीजिएगा। कौन हमारे यहाँ नहीं जानता? रामायण महाभारत सब लोग जानते हैं। महाभारत में जब लड़ाई खत्म हो गई, सारे कौरव मार दिए गए, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा जो कौरवों के साथ था, उसके मन में इतना गुस्सा था कि उसने शाम होने के बाद जब लड़ाई भी नहीं लड़ी जाती है, उसने पांडवों के कैंप में घुसकर द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। जो युद्ध की जो नैतिकता है उसके भी खिलाफ थी वो बात, हर नियम के विरुद्ध थी वो बात। एक मां जिसके 5 बेटे हैं, पांचों के पांचों की लाशें उसके सामने पड़ी हों, उसका जो हालत होगी वो द्रौपदी की हालत थी। वो मातम कर रही थी, शी वॉज वेलिंग, शी वॉज इनकंसोलेबल। तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, इसे मैं चाहता हूं सब प्लीज गौर करिए, अर्जुन ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी अब रोना बंद कर, मुझसे नहीं देखा जाता, और देख मैं अभी थोड़ी सी देर में अश्वत्थामा का सर अपने हाथ पे काट के ला रहा हूं ताकि तेरे कलेजे को ठंडक हो जाए। और ये कह के जैसे ही अर्जुन मुड़े, द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया, कहा अर्जुन ये काम मत कर। और कहा मैं कभी ये नहीं चाहती कि जिस तरह संतानहीन होके मैं विलाप कर रही हूं, इसी तरह मां गौतमी संतानहीन होके मेरी तरह विलाप करे। ये मैं कभी नहीं होने। What a brilliant example. Dr. Radhakrishnan, commenting on this story, he says this was the voice of Draupadi, but the soul of India was speaking through Draupadi. बड़ा दिल, ये संस्कृति की निरंतरता बनी रही और ये संस्कृति जिंदा रही क्योंकि इस संस्कृति ने अपने मानने वालों से कहा दिल को बड़ा करो। बड़े दिल के हमारे, मैं यही मैं पार्लियामेंट में कानपुर और बहराइच से रहा हूं, लेकिन मैं पैदा यही हुआ हूं आपके नजदीक में बुलंदशहर में। मुझे अच्छी तरह याद है अपने बचपन तक, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में पैदा हुए हैं। न्यूक्लियर फैमिली का तब कंसेप्ट नहीं था, संयुक्त परिवार थे। हमने खुद अपना देखा है और औरों का भी देखा है। बाप कभी अपने बेटे को गोद में लेकर नहीं खिलाता था, भाई के बच्चे को गोद में लेता था। वहां से ये चीज हमारे अंदर आई। और ये तो है देखिए, मैंने आपको बताया एक
एग्जैक्ट एनीडोट फ्रॉम महाभारत, पर उसी महाभारत से, और ये देखिए ये भी बहुत मजेदार बात है, ये शिक्षा कहां से आ रही है? ये हमारी ग्रेट वीमेन ऑफ इंडिया आर इन गिविंग दीज मैसेजेस। ये द्रौपदी ने ये कहा, और ये इसका अब आप इसका यू सी डी जो प्रिंसिपल कहां पे है इसका। पांडवों का, इसके बाद पांडवों का राज्य स्थापित हो गया, बहुत साल हो गए राज करते हुए। धृतराष्ट्र, गंधारी और पांडवों की माता कुंती, इन्होंने फैसला किया कि अब हमें यहां से चले जाना चाहिए राजमहल से, अब हम वानप्रस्थ ले रहे। पांडवों ने बहुत समझाया, रोए, कहा कि मत जाइए, वो नहीं माने। उनको थोड़ी दूर तक, जितना दूर जरूरी था उतना पहुंचाने गए। जब एक थोड़ी दूर पहुंच गए तो मां कुंती ने कहा कि अब तुम लोग वापस जाओ, अब तुम जंगल थोड़ी हमारे साथ आओ। और क्या खूबसूरत बात कही है, निर्वत सुआ कुरु श्रेष्ठी सिया दिपिसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। युधिष्ठिर से कह रही है कि भीम और बाकी भाइयों को साथ लेके अब वापस जाओ राजधानी। और देखो एक बात ध्यान रखना, तुम राजा हो, राजा के लिए अब ये सिर्फ राजा पे लागू नहीं होता, परिवार चला रहे हैं आप तो वहां पे भी यही सिद्धांत लागू होगा। उनका तुम्हारी योर रीजन एंड विल शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन righteousness and your heart and mind should be big। ये है, मैं दो तीन चीजों को मानता हूं। एक मानता हूं कि हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है इस संस्कृति में कि दिल बड़ा होना चाहिए, ताकि आप सबको अपने विविधताओं से नहीं, भारत में विविधताओं से कोई परेशानी नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इनफैक्ट मैंने, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, मैं कहीं बोला था तो मैंने वहां ये I made this point that we are talking of tolerance, intolerance. Swami Vivekananda has said that tolerance, when somebody talks of tolerance, it sounds like blasphemy. It sounds as if the other person is trying to tell me that although he considers me wrong, but he is tolerating. He said tolerance is not our tradition. Our tradition is acceptance. Right from lowest fetishism, जो प्रकृति को की पूजा करते हैं ना, उन लोग जंगलों में रहते हैं बेचारे, उनका उतना विकास नहीं हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उनसे लेकर और जो हाईएस्ट मोनोथीज्म है, हम इसको ये मानते हैं कि ये विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो परम सत्य है उसकी अनुभूति करने का प्रयास है। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे को, ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि यहां इन्होंने प्रयास किया और रास्ता दिखाया, दूसरी जगह किसी और ने प्रयास किया और रास्ता दिखाया, लेकिन ये अलग अलग संदर्भों में एक ही जो यात्रा है उसकी कहानी है। ये हमारे यहाँ ये कहा गया। और देखिए आप और कीजिए, दुनिया में आज से कई हजार साल पहले क्या कहा, भारत को डिफाइन कैसे किया, उसी में मैं समझता हूं भारत की संस्कृति की निरंतरता और भारत की संस्कृति की सफलता
अकेले उस डेफिनेशन पे अगर हम गौर कर लें, उस परिभाषा पे गौर कर लें, जिस तरह भारत को परिभाषित किया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में, तो उसी से ही साबित हो जाए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिचैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीयत संतति। उत्तर में समंदर तक और दक्षिण में, उत्तर से लेकर समंदर तक और दक्षिण से लेकर हिमालय तक, इस भूभाग का नाम भारत है। और यहाँ रहने वाले भी नहीं कहा है, संतति, संतान, वो भारतीय। इसमें कोई शर्त है, किसी किस्म की कोई शर्त है इसमें, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई एलिजिबिलिटी का टेस्ट नहीं, एक है बस, और वो ये है, वो मैं बल्कि दूसरे बजाय अपनी जुबान में कहने के दूसरे उससे बताता हूँ। उसमें है कि, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लगता है कि आज हम जिसे पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज कहते हैं, उसमें हम पहले कहते थे, अब पहले महिलाओं को संबोधित किया जाता है। ये अवेयरनेस दुनिया में आज से 50 साल पहले भी नहीं थी। लेडीज फर्स्ट, ये दुनिया में 50 नहीं तो 100 साल पहले तो नहीं थी निश्चित तौर। और ये श्लोक क्या कहता है? भारतेषु स्त्रिया पुरुषो, पहले स्त्रियां, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत को परिभाषित किया है, कैसे करके परिभाषित किया कि ये यहाँ पर इस देश में विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं जो नाना देव अर्चना युक्ते, जो अलग अलग इष्ट देव, उनके अलग अलग इष्ट देव हैं, वो उनकी पूजा करते हैं और उनके रस्म रिवाज भी अलग अलग। तो चाहे आपका इष्ट देव कोई हो, चाहे आपके रस्म रिवाज कोई हो, चाहे आपका खाल का रंग कोई हो, चाहे आप जो कोई भाषा बोलते हैं, अगर आप इस भूभाग में रहते हैं तो आप भारत की संतान हैं। आज की तारीख में कहेंगे भारत के नागरिक, भारत तो उन्हें संतान कहते हैं, हमारे साहित्य में तो उसको संतान कहा गया। और जरा गौर कीजिए, भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक नाम है जो आमतौर से लोग थोड़ा कंजर्वेटिव को क्या कहेंगे साहब, संकीर्णता, जरा संकीर्णता से जोड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि किताबें जो होती थी पहले हाथ से लिखी जाती थी। पहले तो एक जमाना था कि हाथ से भी लिखी हुई नहीं, हाथ से लिखी जाती थी। अब लिखने वाला तो मर गया बेचारा, किसी और के हाथ में आ गई। वो अपने जमाने के हिसाब से अपनी फायदे के लिए कुछ उसमें चाहता था, उसने एक नई लिखवाई और उसमें कुछ और बढ़ा दिया, उसमें कुछ और बढ़ा दिया। कॉपीराइट जैसी कोई चीज नहीं थी, और हिंदुस्तान में तो कॉपीराइट को हमारी परंपराओं ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। हर किताब का लेखक यहाँ व्यास है, सैकड़ों साल का फर्क है किताबों में, और व्यास है लेखक। वह व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यास लिखने वाले को कहा गया है व्यास। और ये तो है पुरानी बात। मैं देख रहा था हमारे कौन बोस प्रोफेसर फिजिक्स के, बंगाल के, अब से मुश्किल से फिजिक्स के मुश्किल से 100 साल हुए होंगे, 100 साल भी नहीं हुए शायद। और ये जो आज कोई, मैं देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको सही टर्म अगर इस्तेमाल ना करूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी। उनके इटालियन दोस्त ने उनको खत लिखा कि ये जो तुम्हारी डिस्कवरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नाम से, इसको है, आप सब लोग जाके इसको देख सकते हैं। हिंदुस्तान में इसका कंसेप्ट नहीं था। ज्ञान सबके लिए है। आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वते। दुनिया में कहीं से भी आ रहा हो ज्ञान, वो ज्ञान
उस पर सबका अधिकार है, ये हिंदुस्तान की कल्पना थी। और मैं ये मानता हूं कि यही है। आपसे तो मैं कहूंगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि मैं हर उस आदमी को जिसको ये प्रिविलेज मिला है कि वो शिक्षा अर्जन कर सके, मैं उसको आई विल, बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल किए और कहा है कि आई विल कंसिडर हिम ए ट्रेटर if he does not think in terms of the welfare of those poor people who never had the opportunity to educate themselves. तो हमें सिर्फ ये और कोई चीज है नहीं दुनिया में जो जानवर और इंसान में फर्क करती है। जानवर अपने लिए जिंदा रहता है, उसे अवेयरनेस नहीं होती, और तो अपने लिए भी नहीं जिंदा रहता, सिर्फ आज के लिए जिंदा रहता है, उसे अवेयरनेस नहीं होती, वो अपना खाना स्टोर करके नहीं रखता है। आज हम मानते क्या है, प्रैक्टिस में है कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण। ये भारत की प्राचीन परिभाषा ब्राह्मण की ये नहीं। ब्राह्मण वो है one who seeks knowledge and expands his mind, not just seeking knowledge. Expansion of mind is essential. Expansion of mind किस चीज को कहा गया है हमारी परंपरा में? Expansion of mind कहा गया है जहां अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब। एक्सपेंडेड माइंड वो है जो ये मेरा है और ये तेरा है करके नहीं देखता, उसके लिए तो पूरी दुनिया। और ये मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ ही ये था, वन हु सीक्स नॉलेज एंड सक्सीड्स इन एक्सपेंडिंग हिज माइंड। हमारी शिक्षा से हमारे पास ज्ञान आए। और मैं इसके साथ टाइम काफी हो गया है, आप लोगों को लंच भी करना होगा, थोड़ा सा आप कुछ इंटरेक्ट भी करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन वो बड़ी खूबसूरत बात कही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं आपसे ये बात दोहराना चाहता हूँ। उनका एक बहुत मशहूर ऐसे द कॉल फॉर ट्रूथ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सेंटेंस है बट इट्स ए ग्रेट बेकन ऑफ लाइट। उन्होंने कहा, he has written this essay call for truth in which he has articulated the importance of a refusal to surrender the dignity of intellect to the keeping of others. अपने सोचने, गौर करने, फिक्र करने, कंसीडर करने, रिफ्लेक्ट करने, मेडिटेट करने के अधिकार को कभी किसी दूसरे के सुपुर्द मत करिएगा। This is the question of dignity of intellect. Intellect is yours. उसको never give it to the keeping of others. ज्ञान अर्जित कीजिए, फैसला अपना कीजिए। और ये इसी में मैं उन्हीं की बात के साथ खत्म कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, I love India. Not because, नहीं, इसे सुनिए, ताली में इसे सुनिए। I love India. Not because I believe in the idolatry of geography. मैं भारत से प्यार करता हूं इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की बुत परस्ती करना चाहता हूं, मैं बुद्ध की पूजा करना चाहता हूं। नो, not because I have had the chance to be born in her soil. इसलिए भी नहीं प्यार करता मैं भारत से कि मैं यहां पैदा हुआ। I love India because she has saved through tumultuous ages the living words which issued from illuminating consciousness of her great daughters and sons. मैं भारत से इसलिए प्यार करता हूं कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी इस देश ने
अपने महान बेटियों और बेटों के वो शब्द जो जागरूकता से भरे हुए थे, उनको संभाल के रखा, उनको संजो के रखा, उनका संरक्षण। यही निरंतरता है, और कोई चीज निरंतरता नहीं होती। If I can refer to the wise words of the ancestors who were there 3000 years back, इसी को ही तो निरंतरता कहते हैं, और किस चीज को निरंतरता कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, अगर मुझे सही याद है, तो उन्होंने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम। Truth is Brahma. Wisdom is Brahma. Infinite is Brahma. Peace is Brahma. Shantam Shivam. Goodness is Brahma. Advaitam. Herein lies the secret. Advaitam. Unity of all beings is Brahma. ब्रह्मा और कुछ नहीं। ब्रह्मा, ये सारी चीजें ब्रह्मा, हम इसको आत्मसात कर सकें। और इसका कुछ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कहने से नहीं और सुनने से नहीं। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है, और अंग्रेजी की कहावत है, रेपिटिशन इज द डॉटर, नॉलेज इज द डॉटर ऑफ रेपिटिशन। हमें उस चीज का हमारे अपनी परंपराओं में इसको सुमिरन भी कहा गया, स्मरण भी कहा गया, कि हम उन अच्छी बातों को स्मरण करें और उसको सत्यम वद धर्मम च, हम सच बोलें, और जो धर्म